Assalamualaikum everyone. I hope you will be very fine. So welcome to my channel Solutions for All, and I hope that you all will be very fine. So let's start today's lecture. So in this video I'm going to share about simple past passive, but before that let's think about, like, have you ever wondered why voices are so crucial in our daily lives? Okay, if you never think about, so please think. Okay, today you have to think about this, and then you have to tell me in the comment section. All right. So you have to also imagine the language in all over the world where the active and passive voice they never exist. All right, and then you have to tell me in the comment section. Okay, let's start today's video. In this video, as you all know that in my previous, if you have gone through that my part 3 of the video, like in that video I had discussed about the simple present passive, but today in this video I'm going to discuss about simple past passive. But I won't start, I want to just start with the subject, helping verb and object and all that things, because I had already discussed and I taught you in that video. If you guys want to know about, if you want to clear the concepts of simple present passive, so you can watch my previous video, because in that video I had discussed in detail. So आप जब उसको देखेंगे तो आपको सारी क्लियर समझ आ जाएगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस हो चुकी हैं, इसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे. मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही आपसे डिस्कस करूँगी, जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किए, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल दैट, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज़ व्हाट थिंग्स लाइक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस. तो इसको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, बिकॉज इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. तो अपने टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग जल्दी से, ताकि मेरी वीडियो इतनी लेंथी ना हो जाए कि आप लोग भी उसको, यू विल जस्ट गेट बोर बाय watching this video and listening again and again same things. So that's why I will prefer कि हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करें जो कि सिंपल पास्ट पैसिव टेंस से रिलेटेड हैं. तो इसमें जस्ट ये है, लेट मी टेल यू, ऑल द रूल्स आर द सेम. जितने रूल्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, बेसिक 3 रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, in a very simple language, in a very simple way, like how can we change, it always help you, like in conversion of active voices into passive voice sentences. Now let's move to the next slide. So I'm just going to tell you, like, what about the subject, helping verb and object. Subject, as you all know, that it can be noun and it can also be pronoun sometimes. Okay, so we are having 2 ways only to just talk about or to write about the subject. So in a sentence, whatever it will be given to you, so that can be noun or sometimes a pronoun. So whatever depends on you, you are going to write, you are going to use in a sentence. After that, let's discuss about helping verb. So what helping verb, it matters a lot. So what helping verb we are going to use in simple present tense, past tense, and whatever tense we are having. But this is what, like, did or V2. So you can say, you can see on screen, like I have mentioned did and V2 together. Why? Because she did write poetry. So this is the sentence. So of course it's cross, it's not, it's an incorrect one, it's a wrong sentence. We can't write. अगर आपको did use करना है तो ये कभी भी इस तरह से मत use करना. You can write like she didn't or she did not write poetry. This is the correct way to write, because she wrote a poetry. This is what इसमें मैंने इस sentence में आप देख रहे होंगे, मैंने V2 यानी simple past tense use की, ठीक है, second form of verb use की, but there is no usage of did in that sentence. Why? Because did we use for what purposes? So I'll also discuss about the purpose, like why do we use it, but before it I will definitely say did हम कभी भी अगर यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ आप लोग को हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. इस चीज़ को अपने माइंड में रखें प्लीज़. अगर आप डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, योर सेंटेंस इज़ टोटली रॉन्ग. It's not accurate one. It's not the correct one. So please, you need to correct your sentence first. आप उसको पहले ठीक करें, क्योंकि this is what no helping verb, only V2 you can use. This is for affirmative sentence.
अगर आपके पास कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, एज यू कैन सी एग्जांपल ऑन स्क्रीन, लाइक शी रोट अ पोएट्री. So in this sentence you can see like second form of the verb write I have mentioned wrote. like wrote second form है, but आपको कहीं did नज़र नहीं आ रहा. ऊपर अगर एग्जाम्पल में आप देखें we did write poetry. अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर हमने did यूज़ करना है और सिंपल पास्ट टेंस में इस तरह से we did write, तो this is wrong. ओके अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है we didn't और we did not write poetry, so this is the correct one. How it's correct one? It is correct like she didn't or she did not write poetry, क्योंकि इसमें आप देखें कि did के साथ हमने V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब write यूज़ की है. So did plus V1, this is the structure combination of helping verb and a main verb for affirmative sentence that we can use in sentences. In English sentences, simple past tense I'm discussing. Okay, remember this. So इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर हम लोग डिड का यूज़ कर रहे हैं, affirmative sentence है, there is no negation, no interrogation, zero interrogation and zero negation in a sentence, that will definitely be an affirmative sentence. So in affirmative sentence, what you're going to do, you have to use did plus V1. All right, so please remember it. Then let's move to the next one. Wrote, as I gave you the concept, like what can we use, did plus V1. But if we are using like affirmative sentence and a very simple and a positive sentence, then you can use second form of verb but without any auxiliary verb. Okay, so this is what, like now you can see on the screen rule 1 we are applying. So in detail I have discussed in my previous video part 3. You can watch. मैं डिस्क्रिप्शन में कम उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से लिंक कॉपी करके उसको क्लिक करके देख लीजिएगा. पार्ट 3 उसमें भी आप लोगों को मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल से बताई है कि हम सिंपल प्रेजेंट पैसिव को किस तरह से टेंसेज में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. और क्या सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, इन सारे टेंसेज में जितने भी टेंसेज उठा लें आप, उनको 8 टेंसेज होते हैं टोटल जिनको हम पैसिव में चेंज करते हैं. और उन 8 टेंसेज को चेंज करने के लिए हम लोग सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स उनके माइंड में रखने पड़ते हैं और फिर हमको किस तरह से चेंज कर लेते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है. अदर देन देयर इज़ नथिंग टू रिमेंबर. Simply all the formulas, all this is what like we are having in tenses, these are same. So rules are same, just you need to apply. Application is different. Why? Because of their auxiliary verbs and the tense. यहाँ पर अगर आप देखें like whatever we are having the example and we convert this sentence into passive. A new project was started by us. So a new project was started. अगर आप by us का यूज़ नहीं करते, ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं भी कर रहे, because the sentence is giving already it gives you a complete sense, तो उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आप उसको नहीं भी ऐड करेंगे तो आपका सेंटेंस दैट विल बी करेक्ट. ओके, सो ये जो चार्ट है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये तो मैंने अपने प्रोनाउंस को यानी कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इनटू पैसिव वॉइस. तो अगर आपको पैसिव सेंटेंसेस को एक्टिव में चेंज करना है तो उसका भी सेम यही रूल्स होंगे. इन्हीं रूल्स को आपने बस यू हैव टू रिकॉल देम, उन्हीं को बैकवर्ड्स अप्लाई करना है तो आप सिंपली उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आप जब माइंड में लेकर आएंगे आपके सोचेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने भाई अगर चेंज करना था पास्ट पैसिव में तो मैं उसको किस तरह चेंज कर सकता हूँ. तो उसको आप देखेंगे कि इज एम आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट वी कैन यूज़ विद द पास्ट पार्टिसिपल्स. तो आपने इन्हीं को अगर आप देखें डू डज वॉज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, मतलब उसी रूल को अगर पैसिव में आप देख रहे हैं, पैसिव को आइडेंटिफाई करना है. इफ़ इट इज़ रिटन लाइक इट ग्लास इज़ ब्रोकन बाय हर, तो उस सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा इट्स ऑलरेडी लाइक कि इज़ के साथ अगर आपके पास पार्टिसिपल है तो डेफिनेटली इट इज़ पैसिव नॉट एक्टिव वन. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपको जो मैं ट्राई कर रही हूँ समझाने की वो समझ आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही ना तो कोई मसला नहीं है. हम आप दोबारा देखिए, बार बार देखिए इसको, वीडियो को यू हैव टू वॉच एंड लिसन केयरफुली,
क्योंकि जो भी एक पॉइंट हम बता रहे हैं अगर और हाँ अगर आप इसको फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं ना, आगे कर करके देखेंगे तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली समझ नहीं आएगी रूल्स की। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा अगर 15-20 मिनट आपको लग जाते हैं तो डजेंट मैटर, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इट मैटर्स अ लॉट। तो आपको फुल वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। यू हैव टू वॉच कम्प्लीटली एंड लिसन केयरफुली सो दैट यू कैन गेट इट क्लियरली। तो अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको तो प्लीज़ वॉच, आप लोग फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें, स्टार्ट टू एंड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बीच में स्किप कर देते हैं और फिर हम लोग को समझ नहीं आती, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप लोगों को समझ आएगी। Now let's have some examples of active and passive voice. So how can we change active into passive? But this is regarding simple past passive. So you can see on your screen, this is what, like, I have mentioned only 5, but you can have more than many more examples. You can search about, you can just write, you can just take or write common sentences and try to change them into passive voice, but that can be only for simple past tense, because simple present tense we had already discussed and this is what going on सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको अगर आप वॉच से आपने सुनी है वीडियो तो आपको आई होप से कि समझ आ गई होगी। अब देखेंगे सबसे पहले द फर्स्ट वन इज she ate an orange. So an orange was eaten by her. We created a software. A software was created by us. Ali didn't consider new applicant. The new applicant wasn't considered by Ali. Did he assign a presentation? So was a presentation assigned by him? So this is what you can focus over here, because if we are having an interrogative sentence, so of course if in active sentence we are having interrogation, in the passive voice we need to use interrogation as well. So we have to make a question, as we are having like did he assign a presentation, so that will be same and interrogative one in the passive one. So was a presentation assigned by him, and also you need to put question mark at the end of the sentence. Now let's have a look like what main verbs and helping verbs are mentioned here. For example, in first sentence it mentioned like ate and then created, didn't consider, did and assign. So this is what did is used, that's why first form of verb, and then again didn't, get, not got. Okay, so this is what like how these are changed into passive. So ate is changed into was eaten, and created is changed into was created, and didn't consider, it is changed into wasn't considered, and did assign, so it is changed in question, so was, and then past participle is assigned. So as you know, like in the active one it was did in the beginning of sentence, so same in passive voice was in the beginning of sentence and assigned. So what about the fifth one? Fifth one is what, like you have to change yourself. She didn't get good grades in exams. So this is what you are going to change. You are going to think what it can be like. Now you have to think and give me the answer in comment box. I'll wait for your answer. Actually I remember like आई थिंक आपने प्रीवियस जो मेरी वीडियो है वो पूरी नहीं देखी, और उसमें भी मैंने आपको ये असाइनमेंट दी थी कि जो मेरा पार्ट 3 था उसमें भी आपको मेंशन करना था फिफ्थ वन, व्हाट इट वाज लाइक, व्हाट शुड बी इन पैसिव, यू हैड टू कन्वर्ट इनटू पैसिव, बट यू डिडंट गिव मी आंसर। जो अगर नहीं किया तो अभी दोबारा से देख लें, उसको जल्दी से देखें। लास्ट फिफ्थ वन जो सेंटेंस मैंने ऐड किया था वो क्या था, और उस फिफ्थ सेंटेंस का आंसर क्या होगा, उसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे। इफ़ यू नो दिस, इफ़ यू नो द आंसर देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। वेल आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। और अब तक के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो को यू हैव टू जस्ट नॉट ओनली वॉच, you have to like it, and also comment in the comment section, and you can share with others as your friends and fellows, whoever is there, you can share with them as well. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, ऑफ कोर्स आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तभी आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और अगर नहीं भी हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर कीजिए। और अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स फेलोज़ वगैरह हैं उनके साथ ज़रूर, रिलेटिव्स हैं जो भी हैं उनके साथ शेयर करें, उनको कहें कि वो भी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और जितना ज़्यादा हो सकता है यू हैव टू प्रमोट माई चैनल सो दैट अगर आप लोग प्रमोट करेंगे, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ही मेरी जो है वो वीडियोस और मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। और मेरी चैनल की ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए आई नीड योर कोऑपरेशन। सो इसके लिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल एट द एंड अगेन लाइक यू हैव टू जस्ट शेयर एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़। पूरी वीडियो देख लिया करें, उसको स्किप मत किया करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं और स्किप कर देते हैं और फिर हम लोग को समझ नहीं आती। सो अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नाउ टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।